Good morning, bacha. Exercise 6.2 and these two theorems, even their proof is there, we will do in the classroom. So now just I am writing the statement so that I can proceed with the exercise because I have to use these things. So what they are saying, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides, see, this is triangle. They are saying if a line is drawn parallel to one side, so this is one side, so I have drawn this line of a triangle to intersect the other two sides. It is intersecting at distinct points P and Q, but they haven't mentioned which point, so I have given it as P and Q. The other two sides are divided in the same ratio. Same ratio means AP by PB is equal to AQ by OC. It means if I was talking about the proportionality of the sides. So these are the proportionality. Means ये अगर आपके पास लाइन बोला गया है कि इसके पैरेलल है और इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, सो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से AP बाय PB, AQ बाय QC, ऑल्सो आगे इसकी फर्दर एक्सटेंशन है AP बाय AB, कंप्लीट साइड ऑल्सो AQ बाय AC. This is the first one, what they are saying, and this is the converse of this. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side. Means अगर ratio same है AP by PB, same in the same triangle, AQ by QC, then APQ parallel BC. So this is the converse of this, and this theorem is also known as BPT, Basic Proportionality Theorem. क्योंकि proportionality की बात की गई है, so this is basic proportionality theorem. I am going to raise it and we will start our exercise 6.2 question first. We will do the proof in the classroom because already it is proved in the book. I think it is unnecessary to prove it here. Here now, question first. What they are saying, exercise 6.2, they are saying in this figure, first figure is, first part, it is A, B, C, D, E. 1.5 centimeter, 3 centimeter, 1 centimeter, and they said in first figure DE parallel BC. Now what is given that DE parallel BC in this triangle given in triangle ACB DE parallel BC, ठीक है, and AD is equal to 1.5 centimeter. AE is equal to 1 centimeter, DB is equal to 3 centimeter, let EC is equal to x centimeter. क्योंकि उसने बोला है ना x centimeter का x लिख लो, क्योंकि उसने बोला ना find EC. हाँ जी. Now by as DE parallel BC, so by basic proportionality थ्योरम क्या आएगा, साइड की रेशो AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. सो AD 1.5 सेंटीमीटर, DB 3 सेंटीमीटर, AE 1 centimeter, EC x centimeter. So cross multiplied, it is x into 1.5 centimeter, 3 centimeter into 1 centimeter, x. It is 3 centimeter square by 1.5 centimeter. ये मैंने काट के यहाँ पे 10. So ये 2 के टेबल पे कट हुआ 2, sorry 5 के टेबल पे कट हुआ 5 2s are 5 3s are, so it is cancelled. This one is cancelled. X equal to 2 centimeter. Simple, clear. But instead of writing basic proportionality theorem, you can write BPT. It is the standard form also. So now the second part, A, B, C, D and E. It is 7.2 centimeter, 1.8 centimeter, 5.4 centimeter. Now in triangle ABC, आई विल चेक. बच्चा 1 मिनट की दिख रहा है ना, अब जो मैं कर रही हूँ. हाँ, अब थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ इसको.
हाँ अब ये क्लियर हो जाएगा ना। इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी गिवन है एंड बाकी वैल्यू लिखो। लेट एडी इज इक्वल टू एक्स, डीबी इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर and EC 5.4 centimeter. So by BPT, AD by DB is equal to AE by EC, AD by DB, X by 7.2 is equal to 1.8.5.4 centimeter, centimeter, centimeter. Cross multiply X into 5.4 centimeter, 1.8 centimeter, 7.2 centimeter. X 1.8 centimeter, 7.2 centimeter by 5.4 centimeter. Now it is cancelled 10. This is also cancelled 10. This one is also cancelled 10. तो यहाँ पे ये आ गया 18 3 I think 54, 3 का यहाँ पे 3 2s are 6 and 3 4s are, so x equal to 2.4 centimeter. I hope बच्चों this question is clear. Simple BPT use की है to find the values of the unknowns. Hope it is clear. थोड़ा सा इधर भी कर देती हूँ. Now question second. बच्चा मैं रब कर दूँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट. वो नोट करो. Question second. E and F are the points on the sides A, PQ and PR respectively of a triangle AP of a triangle PQR for each of the following. State that. हाँ जी बच्चा अब इसमें से हमें चेक करना है कि क्या ये पैरेलल है कि नहीं. हमने जो सेकंड थ्योरम की थी उसमें हमने क्या किया था, हमने बोला था कि अगर रेशो सेम हो जाएगी तो मेरे पास लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. सो आई विल ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR. E और F 2 पॉइंट हैं, PE 3.9, PF 3.6, EQ 3 सेंटीमीटर एंड FR 2.4. नाउ पहले इसकी रेशो PE बाय EQ इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर बाय EQ 3 सेंटीमीटर. ये मैंने कैंसिल करके नीचे 0 10 था, नीचे 0 लगा दिया. 3 के टेबल पे कट किया 13 बाय 10 1.3. ठीक है, रेशो सेंटीमीटर तो आएगा नहीं. PF बाय FR, PF 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर. 12 के टेबल पे कट किया. 12 3 is 12 2, that is 3 by 2. This is 1.5. So आप लिखोगे PE by EQ is not equal to PF by FR. दोनों सेम नहीं है. Therefore PF is not parallel to QR. उसने यही बोला था कि चेक करो कि ये पैरेलल है कि नहीं है. Please QR. They told this thing to find that. Oh sorry. एक मिनट बेटा मैं सेट करता हूँ, हिल गया दोबारा से. ठीक है. Second part. PE 4 centimeter, QE 4.5 centimeter, PF 8 centimeter, RF 9 centimeter. So again draw the triangle. P, Q, R, E and F. PE 4, PF 8, QE 4.5, RF 9 centimeter. यही है. PE 4, QE 4.5, PF 8 and FR 9. Now PE by EQ.
PE 4 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर, ये कट गए, इट इनटू 10, सो दिस इज 40 बाय 45, 8 के टेबल पे कट किया, 8 बाय 9. नेक्स्ट PF बाय FR 8 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, 8 बाय 9. सो PE बाय EQ इज इक्वल टू PE बाय EQ, हाँ जी, PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR, therefore by converse of BPT EF parallel to. Clear? Now third part and last part of this question, which I am going to raise this. Third part, P, Q, R, T and F. हाँ जी, PQ 1 point पूरी दी है 1.28 सेंटीमीटर and PR this is 2.56 सेंटीमीटर, PE 0.8 सेंटीमीटर, PF 0.36 centimeter. Given PE 0.18 centimeter, PQ 1.28 centimeter, PF 0.36 centimeter, PR 2.56. Now PE by PQ 0.18, सॉरी नॉट P, हाँ PQ, क्योंकि बच्चा हमने किया था ना, उसके बाद मैंने जब थ्योरम लिखवाई थी तो बोला था कि साइड की पूरी हाफ पोर्शन की जगह पूरी साइड भी हो सकती है. सो दिस इज 0.128 सेंटीमीटर. बच्चा सेम पॉइंट्स पे डेसिमल डायरेक्टली कर जाते हैं. सो दिस 18 बाय 128, 2 के टेबल पे कट करो 9, 2 के टेबल पे कट किया 64. आई थिंक आप इसके बाद नहीं करता, किसी के टेबल पे नहीं आता है. नेक्स्ट PF बाय PR, PF 0.36 centimeter, PF 2.56 centimeter. This is cancelled. This one, this 36 by 256. 2 के टेबल पे कट किया 18, 1, 2, 8. 2 के टेबल पे कट किया 9, 64. Yes, 9 by 64. बचा वो रब कर रही हूँ. So now PE by PQ is equal to PF by PR. So by BPT EF parallel. हाँ जी बच्चा, आई होप अब ये कंसेप्ट समझ आना शुरू हो गया होगा आप लोगों को, एंड यू पीपल विल बी एबल टू सॉल्व इट. थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.